Hello, good morning, guys. My name is Tushar, and I am here to present a topic which is Section 138 Negotiable Instrument Act. So, ये topic बहुत बड़ा है, so I would like to discuss in briefing. So, starting from the definition, what is Negotiable Instrument Act says that and how it regulates. So, Negotiable Instrument Act 1881 regulates the different types of negotiable instrument. इसमें बहुत सारे instruments हैं. पहला promissory notes, check, bill of exchange. According to the section 13 of the act, negotiable instrument means what is the meaning of negotiable instrument, which is a promissory note, bill of exchange, and check payable either to order or to bearer. So negotiable instrument, if we can in simple words, it means any written document which is transferable on delivery. So, Section 138 of this Act talks about punishment for dishonoring of checks. Section 138 was introduced as a criminal offense in 1989 by the way of an amendment. So, guys, I would like to ask a question, uh, whether check dishonor of check is a criminal and a civil case can be filed simultaneously. क्या ये दोनों सिविल और क्रिमिनल केस चेक ऑफ डिसऑनर में साइमल्टेनियसली फाइल हो सकते हैं? प्लीज कमेंट डाउन करके मेरे को इस चीज़ का आंसर बताना. So I would like to proceed further. Section 138 talks about punishment for dishonoring of checks. So, the amendment of the Negotiable Instrument Act 1881, and the main objective of the introduction of this section was to encourage the use of check and increasing the credibility of transaction through checks by making the dishonoring of the check as an offense. Now, this section provides the two three points which is very important, so I would like to focus on them. First point is the check has been presented to the bank within the period of 6 months from the date. कब से? जब से वो चेक इशू हुआ है तब से हमें वो चेक बैंक को दिखाना ज़रूरी है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ विच और वो विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी. And the second one is the payee or the holder in due course of the check, as the case maybe makes a demand for the payment of the said amount of money by giving notice in writing to the drawer of the check. These 2 points are very important for this section. Now, case ingredients. The main ingredients of this check is a check is drawn by the accused or an account maintained by him with a banker. Second one is the check amount is in discharge of a debt or a liability, and the check is returned unpaid for insufficiency or of fund. चेक रिटर्न हो सकता है अनपेड फॉर इनसफिशिएंट फंड के वजह से चेक रिटर्न हो सकता है, or that the amount exceed the arrangement made with the bank. The offence standing committed the moment the check is returned unpaid. Now, the sentence prescribed under Section 138 is up to 2 years or with fine, which may extend or twice the amount or with both. What needed to be noted is the fact the power under Section 357, Clause 3 of CRPC to direct payment of compensation is in addition to be said prescribed sentence. अगर हम सेंटेंस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कर रहे हैं तो क्या सेक्शन 357 क्लॉज 3 लगना चाहिए? ये मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना कि सेक्शन 357 इस सेंटेंस में कैसे अप्लाई होता है और एप्लीकेबल है भी कि नहीं है. कमेंट डाउन करके प्लीज मेरे को बताना. प्लस द डायरेक्ट पे ऑफ टू पे compensation can be enforced by default sentence under section 64 IPC also, and by recovery prescribed under 431 सेंटेंस जो था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का. इसमें हमने 3 सेक्शंस और डिफाइन किए हैं. पहला सेक्शन 357 क्लॉज 3 ऑफ CRPC, and the second one is 64 IPC, and the third section is 431 of CRPC. So प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करके बताना क्या ये 3 सेक्शन जो मैंने अभी आपको बताए हैं क्या वो एप्लीकेबल है इस सेंटेंस में या नहीं.
और हैं तो क्यों हैं, किस तरीके से है, मेरे को कमेंट डाउन करके प्लीज बताना. So now, I would like to proceed further. In a criminal law, commission of offense is one thing, and the prosecution is quite another, obviously. So, commission of offense is governed by Section 138 of this Act. So, Section 138, while making dishonor of check an offense punishable with imprisonment and fine, which I've discussed earlier, also provide for safeguards to protect drawer of such instrument where dishonor may take place for a reason other than those arising out of dishonoring intentions. So, जैसे मैंने पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, whether the criminal and civil case can be filed simultaneously or not, कमेंट डाउन करके प्लीज मेरे को बताना. So, providing this sections shall apply three basic points like check has been presented to the bank within the 6 month, the payee or the holder in the due course of the checks may be or make some demand for the payment of the said amount. The third point is the drawer of such check fails to make payment of the said amount of money to the payee. So what will be the happen? So now the classification of offense. What will be the classifications of offense? So an offense. What if someone committed an offense under Section 138? It is cognizable or not? Please comment down this question, which is very important. This Section 138 is a cognizable offense or a non-cognizable offense. So this section, I would like to answer this question is this: yes, this section is a cognizable offense. Now, how it is a cognizable offense? I would like to answer like a offense committed under section because मैंने आपसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, what it is a civil or criminal uh, case file can be filed simultaneously or not. So yes, it is filed, and also it is a non-cognizable offense whether when police officer cannot arrest the accused without an arrest warrant. ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है गाइस. Now, I will proceed further. The one more question arises in my mind when I have researching on this topic. Mens rea are required or not required in this section 138 of Negotiable Instrument Act? Please comment down this question. मैंने आपसे तीन क्वेश्चंस पूछे हैं. मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट डाउन में गाइस प्लीज बताना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि डिक्रिमिनलाइजिंग ऑफ सेक्शन 138 पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, प्लस हमारे फेवर में, इस कंट्री के फेवर में कैसे है, मुझे इस चीज कमेंट डाउन करके आंसर बताना. सो आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर. मेंसरिया नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 138. व्हाई? Because the objective of the parliament was to strengthen the use of check distinct from other negotiable instrument as a mercantile tender, and therefore it became essential for section 138 to be freed from the requirement of proving mens rea. Mens rea means guilty of state mind. So this has been achieved by deeming the commissions of an offense under section 138, but also by virtue of the succeeding two acts. Section 139 and section 140 is also involved in this section, which clarify it will not be available as a defense to the drawer. So now I would like to say notice under section 138. So when the notice is sent by the registered post by correctly addressing the drawer of the check, the mandatory requirement of issue of notice in term of clause B of proviso to section 138 of the act stand compiled with. So both the section compiled with this. Now, I would like to say about online proceeding. Uh, Online proceeding is possible in this section. Why? Because at least some number of section 138s can be decided online if complainant with the affidavit and the document can be filed online, proceed issued online, and the accused only online proceeding possible when accused
pay the specific amount online. It may obviate the need for personal appearance for the complainant or the accused. Only if the accused contest need for appearance of party may arises, which may be through council or wherever video conferencing can be used. So no personal appearance can be involved in this proceeding. This is the matter to be considered by the high court, and wherever viable appropriate direction can be issued. There is one case is also Meters and Instrument Private Limited versus Kanchan Mehta. Meters and Instrument Private Limited versus Kanchan Mehta, 2018, 1 SCC 560. प्लीज़ इस केस को पढ़ना जाके, बहुत इम्पोर्टेंट केस है. सो आपको पता लगेगा कि ऑनलाइन प्रोसीडिंग पॉसिबल है कि नहीं है, और है तो किस सिचुएशन में पॉसिबल है. सो मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, डिक्रिमिनलाइजिंग ऑफ सेक्शन 138 पॉसिबल है कि नहीं है. ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको ये पूरा वीडियो में बता रहा हूँ. बट मेरे को कमेंट डाउन करके मेरे को आंसर बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. सो I would like to proceed further the decriminalizing section 138. So on June 2020, the Ministry of Finance proposed decriminalizing various minor offenses for improving business settlement and unclogging court process, which also includes section 138 of Negotiable Instrument Act. So the main purpose of proposal is to increase the foreign investment in our country. और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो इट विल हेल्प बूस्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग दिस कंडीशन, ड्यूरिंग दिस pandemic. So also the main objective of this section is to promote the efficiency of banking operation and to ensure credibility in transacting business through checks. So the main idea behind the proposal of decriminalizing section 138 is to decriminalizing will decrease the burden on business and will attract confidence among the investors. Like there are so many startup business who started their business, so decriminalizing section 138 will help them a lot. And also increase the economic growth, public interest, and the national security also. So the also the mens rea is also plays a very important role in this context decriminalizing. Why? Because it is important to evaluate the nature of non-compliance, and also the habitual nature of the non-compliance has to be kept in mind. Negligence must be differentiated with the non-compliance on regular basis. So now the decriminalizing is a. I would like to ask a question. Decriminalizing a good decision by government or not? सो आई कमेंट डाउन करके प्लीज मेरे को बताना कि ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा अप्रोच था कि नहीं था, इससे अपने कंट्री को फायदा हुआ कि नहीं हुआ. सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय part, and from my side I would discussing everything of the section 138 of the Negotiable Instrument Act. Now I just wanted to you guys make an article, blog, केस कमेंट्री. मैंने आपके साथ केस कमेंट्री भी बहुत सारे डिस्कस किए हैं. सो आर्टिकल, ब्लॉग, केस कमेंट्री और डिमांड नोटिस. मैं डिमांड नोटिस का फॉर्मेट आप लोगों से शेयर करता हूँ. आप उसका एक बारी फॉर्मेट देखो, उसके बाद आप लोग बनाना. ये रहा गाइस, ड्राफ्ट ऑफ द डिमांड नोटिस. सो एक केस रियल लाइफ केस है, मैं आपको वो भी पहले बता देना चाहता हूँ. सो एक रियल लाइफ केस है. इसमें ये है कि एक बंदा, एक पर्सन, दो पर्सन थे
जो अननोन थे एक-दूसरे के लिए, प्लस उन्होंने एक हेल्दी रिलेशनशिप अपनी बिल्ड की और जो पर्सन था उसकी वो अपनी शॉप चलाता था दिल्ली में। सो इसमें ये था कि दूसरी पार्टी थी उन्होंने उससे पैसे ले लिए कि मैं आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पैसे रिटर्न कर दूँगी ये बोल के, और जो दूसरे बंदे ने पैसे दिए उसने भी गुड फेथ में, गुड इंटेंशन में दे दिया कि ये मेरी फ्रेंड है, तो मैं इसको पैसे दे दूँगा तो मेरे को टाइम पे रिटर्न हो जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम जिस लड़की ने पैसे लिए थे उसने कॉल्स उठाना बंद कर दिया, इग्नोर कर दिया। सो ये केस के फैक्ट्स थे। मैंने आप लोगों को फैक्ट्स इसीलिए बताए हैं क्योंकि आप इस बेसिस पे मेरे को डिमांड नोटिस का फॉर्मेट या डिमांड नोटिस इस केस के अकॉर्डिंग बना के दे सको। बिल्ड की तीसरी मोहित और रैशल थे दोनों पार्टी, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप, हेल्दी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बिल्ड की, प्लस उस बेसिस पे उसने रैशल को पैसे दे दिए। बट अब रैशल पैसे देने से मना कर रही है आफ्टर सो मेनी कॉल्स, आफ्टर सो मेनी। सो मैं So I would like to give you answer of this question also. So I just wanted to know your point of view also. So please comment down करके अपना point of view भी मेरे को बताना। Plus मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को सेक्शन 138 ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक पे या तो आप मेरे को आर्टिकल, ब्लॉग, केस कमेंट्री, जजमेंट राइटिंग या फिर डिमांड नोटिस, ये 5 चीज़ में से मेरे को किसी भी एक चीज़ जो आपको अच्छा लगे, वो मेरे को बना के सेंड कर सकते हैं इन योर गूगल क्लासरूम। सो आई वुड लाइक टू फिनिश माय पार्ट। थैंक यू सो मच गाइस।